Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 12 of the course Object Oriented Programming. In the previous lecture we have seen data conversion using one argument constructor and using a conversion function. In today's lecture I will show you a summary about the conversion, how we can perform different types of conversion and what kind of function we are required for that. And then we have seen in the last lecture overloaded stream operator. We have overload stream operator, that is stream insertion operator and stream extraction operators. आज हम stream insertion और stream extraction operator को डिटेल से देखेंगे and we overload that operator for the distance class. Data conversion summary. So if we in the last lecture I have shown you the example program in which we have a kilometer class and miles class. So आज जस्ट थोड़ी सी मैं आपको समरी बताऊंगा इसकी कि डाटा कन्वर्जन किस मौके पे आपको किस तरह का फंक्शन चाहिए. फॉर एग्जांपल in this particular statement we are converting a floating point value or assigning the floating point value to an object km1 of a kilometers class. ठीक है, तो for this you need a constructor, a one argument constructor in the kilometer class, and the prototype of the constructor is kilometers and you are passing a floating point value to that constructor, and then you assign that floating point value to the private data member of the invoking object, that is kilometer. The second statement is km1 is equal to 3.5. So for example, further in the program, after declaring the variable, the object km1 of the kilometers class, you can assign a floating point value to that object. But now you have the following option available: either you have an overloaded function, you overload the assignment operator in the kilometers class and the type of the function is void operator equals to float. So आपने equal जो assignment operator है, that is also a binary operator, you overload that operator. So binary operator को जब overload करेंगे तो उस केस में क्या होता है? The object appearing on the left side, it becomes the invoking object, so it invokes the overloaded equal function, operator equal function, and the value on the right side of the assignment of the binary operator will be passed to that function as a argument. So यहाँ पर आपके पास argument float है, so that floating point value will be passed as an argument, and km1 is become the invoking object, that invoke operator equal function in the kilometer class. So if you don't have this function, then or you can have a one argument constructor in a kilometer class. Yes, if you don't overload the don't provide the overloaded function, if you don't provide the overloaded function operator equal in the kilometer class, then the compiler will use the one argument constructor. It will first convert this floating point value into an object. कैसे convert करेगा? It first implicitly pass this value to the constructor and यहाँ से उसको किलोमीटर का object मिलेगा, and then it assign that object to this kilometer object. ठीक है, so 3.5 value जो हमारे पास आ रही है, that is a floating point value. So second option में अगर आपने one argument constructor provide किया हुआ है तो it will first convert this floating point value that is appearing on the right side of the equal sign into a kilometer object, nameless object, and then we have a statement like km1 is equal to nameless object of kilometer class. कैसे convert करेगा? Because it passed this value to a constructor here, and this constructor you have to provide this constructor in the kilometer class, right? So आप इसको ये value 3.5 pass करेंगे, it will create an object and then that object will be assigned to km1. So 3.5 basically वो km1 के private data member को इस तरह से assign हो जाएगा. So you have to provide these two things, otherwise you cannot perform this conversion. ठीक है, इसके हम example देखेंगे अभी code run करके. And then we have a statement miles m1 is equal to km1. Now miles हमारे पास class है, एक user defined class है, and we are creating the object of a mile class named m1, and we are initializing that object with the object of kilometer class, that is km1, right? So this statement is same as if we write miles m1 parenthesis km1 closing parenthesis, right? So this is
you are invoking the one argument constructor, and the type of the argument is kilometer. So in order to execute this statement in your program in main function, you must have a one argument constructor miles, और उसको आप ऑब्जेक्ट पास करें किलोमीटर्स का, राइट, एंड दिस कंस्ट्रक्टर मस्ट बी ऑफ कोर्स इन माइल्स क्लास, राइट. और यू कैन हैव अ कन्वर्जन फंक्शन इन अ किलोमीटर क्लास, ठीक है, और उस फंक्शन की टाइप क्या होगी, इस फंक्शन का नाम क्या होगा, ऑपरेटर माइल्स. जिस तरह से हमारे पास कन्वर्जन फंक्शन हमने देखा था कि अगर हमने कन्वर्ट करना हो किसी किलोमीटर के ऑब्जेक्ट को यूजर डिफाइंड टाइप में, देन वी हैव अ कन्वर्जन फंक्शन ऑपरेटर that primitive type, for example float, operator float. This means that we can convert the kilometer object into float, right? So हम इसको next slide में देखेंगे अभी. So here the conversion function in kilometer class and the conversion function की जो prototype होगी, that is operator miles, operator space miles. That is the name of the conversion function, and that conversion function returns the object of miles class, right? कैसे convert कर return करेगा, it calls the constructor of miles class और उसको पास करेगा इस किलोमीटर के m1 के प्राइवेट डाटा मेंबर. सो किलोमीटर हमारे पास किलोमीटर सेव है, वो उसके प्राइवेट डाटा मेंबर को मल्टीप्लाई करेगा 1.61 से, बिकॉज आई थिंक 1 किलोमीटर 1 mile is equal to 1.6 kilometer, right? It converted and then it calls the constructor and pass that value to the miles constructor and return it. ठीक है, जब वो return होगा it will assign to m1. So that is so this kind of statement, in order to execute such statement, either you could have a constructor in the m1 class or you could have a कन्वर्जन फंक्शन इन किलोमीटर 1 क्लास, किलोमीटर्स क्लास, ठीक है, जो हमारे पास सोर्स ऑब्जेक्ट है उसमें कन्वर्जन फंक्शन भी हो सकता है. देन इफ यू राइट द स्टेटमेंट लाइक आफ्टरवर्ड्स, इससे पहले जो स्टेटमेंट थी ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर थी, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, m1 का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, km1 ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है. नाउ फर्दर ऑन इन द प्रोग्राम वी राइट m1 इज इक्वल टू km1, वी आर असाइनिंग द वैल्यू km1 ऑब्जेक्ट to the object of miles class. So kilometer class का object को miles class के object में assign कर रहे हैं. Now this can be performed if we have overloaded function void operator equal kilometers in mile class. So mile class में हमारे पास overloaded function हो सकता है. So उसको object किस तरह कौन सा पास करेंगे हम, किलोमीटर का object पास करेंगे, and the name of that function is operator equal. So आप इक्वल साइन का ओवरलोड कर रहे हैं तो उस फंक्शन का नाम ऑपरेटर इक्वल होगा. आप उसको कौन सा टाइप का ऑब्जेक्ट पास करें, किलोमीटर का ऑब्जेक्ट पास करें, राइट. सो यू आर पासिंग द किलोमीटर ऑब्जेक्ट एंड दिस m1 बिकम द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट. सो m1 के जो प्राइवेट डाटा मेंबर हैं दे आर डायरेक्टली एक्सेसिबल इन दैट फंक्शन. और यू कुड हैव अ कन्वर्जन फंक्शन इन द सोर्स क्लास. सो डेस्टिनेशन क्लास में ओवरलोडेड फंक्शन होगा एक असाइनमेंट साइन को, एंड यू कुड हैव अ कन्वर्जन फंक्शन इन द किलोमीटर क्लास. किलोमीटर क्लास में हमारे पास कन्वर्जन फंक्शन भी हो सकता है, एंड कन्वर्जन फंक्शन का जो नेम होगा वो क्या होगा, ऑपरेटर माइल्स. दैट मीन्स इट इज कन्वर्टिंग द किलोमीटर ऑब्जेक्ट इनटू माइल्स, राइट. सो किलोमीटर का प्राइवेट डाटा मेंबर एक्सट्रैक्ट करेगा, माइल्स का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, उसको वो वैल्यू पास करेगा बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1.61 एंड रिटर्न इट. एंड जब रिटर्न करेगा दैट ऑब्जेक्ट विल बी असाइन टू m1. और यू कुड हैव अ वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इन द माइल क्लास. अगर इन दोनों में से कोई फंक्शन प्रोवाइड नहीं किया गया, असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया गया माइल्स क्लास में, किलोमीटर क्लास में कन्वर्जन फंक्शन नहीं परफॉर्म किया गया टू कन्वर्ट द किलोमीटर ऑब्जेक्ट इनटू माइल्स ऑब्जेक्ट, देन द वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इन द माइल क्लास विल बी इन्वोक्ड. ठीक है, सो ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, किलोमीटर का ऑब्जेक्ट इसे पास होगा, इट कन्वर्ट दैट वैल्यू एंड असाइन इट टू द m1. ठीक है, वो m1 को असाइन कर देगा, एंड दैट इज कॉल्ड बेसिकली इम्प्लिसिट इन्वोकेशन ऑफ द वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर. कि आपने इम्प्लिसिटली कंस्ट्रक्टर खुद से वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर देगा अगर ये दोनों फंक्शन प्रोवाइड नहीं किए होंगे. सो दैट इज द लास्ट ऑप्शन. फ्लोट f इज इक्वल टू किलोमीटर. नाउ
from user defined type to the basic type. If you want to convert, want to perform such technique, then you must have a conversion function in the kilometer class, and the name of the conversion function is operator. So operator is the keyword that is there in the overloaded function or in the conversion function. The next thing is, in the overloaded function, you have to in the overloaded operator, you have to the function for the overloaded operator, you have to use the keyword operator, and then the name of the and then the operator itself. For example, जहाँ पर हम equal sign को overload कर रहे हैं, so we have operator keyword and then the operator we are overloading, right? So in conversion function we also use the keyword operator and then space and then we tell the type. ठीक है कि किस टाइप में इस क्लास के ऑब्जेक्ट की कन्वर्जन करनी है. सो व्हेन ऑपरेटर फ्लोट function exists in the kilometer class, this means that a kilometer object can be converted into float type. So whenever there is a statement f is equal to km1, where f is a floating point variable, then operator float function will be invoked in the kilometer class. Right? So these are the summary about some of the conversions from basic to user, user to user, and user to basic type. Let's check out the same program that we have seen yesterday. Okay, this is the kilometer class. So in kilometer class we have this function, right? That is okay, let me write it, float to kilometer. So kilometer class में float to kilometer function है. When this function will be invoked? When you assign the object of kilometer class to a floating point variable, right? We will see it. And then हमारे पास ये भी है इधर. So let's make it float instead of double, float. Okay. Okay. So मैंने ये किलोमीटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया. Now what we want to check is we want to check that if we do not have this function, for example this function, in kilometer class, if we don't have this function, right? ऑपरेटर इक्वल साइंस को हमने ओवरलोड किया हुआ है. क्या ओवरलोड किया हुआ है कि अगर हम किलोमीटर का ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे होंगे फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल को, राइट? फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ स्टेटमेंट लाइक ft is equal to km1. So kilometer ka object, we are assigning the value of kilometer object to the floating point object, then this function will be not for this one, but this function will be invoked if we are writing like this ft. Okay, so agar hum because this is not the कन्वर्जन फंक्शन, दिस इज बेसिकली द ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन. इसमें हमने इक्वल ऑपरेटर को ओवरलोड किया. ठीक है, ये कन्वर्जन फंक्शन नहीं है, इसमें हमने इक्वल ऑपरेटर को ओवरलोड किया है फॉर द किलोमीटर क्लास. सो अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट को कन्वर्ट कर रहे होंगे किलोमीटर के ऑब्जेक्ट में, देन इट विल इन्वोक दिस फंक्शन. ठीक है, और अगर ये फंक्शन नहीं होगा, देन इट विल इन्वोक वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, राइट? दिस कंस्ट्रक्टर विल बी इन्वोक्ड, राइट? सो किलोमीटर और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मैंने लिख दी है. सो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ये फंक्शन है जो ऑपरेटर ओवरलोडेड फंक्शन है, असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करने का फंक्शन है, ये मौजूद है क्लास में. सो लेट मी राइट द स्टेटमेंट लाइक k1. सो k1 इज इक्वल टू let me write a default constructor as well in the kilometer class. Kilometers, and what default constructor will do, it will assign the value 0 to kilometer data member, private data member of that object, right? So now if I write 2.5
और 2.4, ठीक है, कोई वैल्यू हमने असाइन कर दी है, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रिंट बाय कॉलिंग द फंक्शन k1 डिस्प्ले फंक्शन, हम इसकी वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। सो बाकी सारी स्टेटमेंट को मैंने कमेंट आउट कर दिया। नाउ लेट्स चेक आउट विच फंक्शन विल बी इन्वोक्ड, कौन सा फंक्शन इन्वोक होता है। सो किलोमीटर फ्लोट टू किलोमीटर, सो यहां पर जो फंक्शन इन्वोक हुआ है दैट इज, लेट मी टेल, दैट इज दिस फंक्शन, ये जो हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है। यही मैसेज डिस्प्ले हुआ था ना हमारे पास, किलोमीटर क्लास में ये जो फंक्शन है इट परफॉर्म फ्लोट टू किलोमीटर कन्वर्जन, ठीक है, फ्लोट टू किलोमीटर कन्वर्जन परफॉर्म करता है। कंपाइल एंड रन इट अगेन। सो किलोमीटर्स फ्लोट टू किलोमीटर कन्वर्जन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। क्यों एग्जीक्यूट हुआ? बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग दिस कन्वर्जन ओवर हियर। सो इफ वी डोंट हैव दिस फंक्शन then the constructor with one argument will be executed. So constructor with one argument कौन से वाला है? For example, मैं इसको यहाँ से comment out कर देता हूँ. Now let's check out this constructor will be invoked, right? Compile and execute. Now you see kilometers constructor. This is a constructor with one argument. One argument constructor, right? So मैंने यहाँ पे लिख दिया. Let me run it again. Now you can see kilometers one argument constructor will be invoked because ये constructor कब invoke हुआ? जब आपने ये conversion perform की है. आप float से किलोमीटर में convert कर रही हैं, ठीक है? Because you do not overload this operator, so that's why इसमें आप कन्वर्जन फंक्शन नहीं लिख सकते इसके लिए, ठीक है, बिकॉज कन्वर्जन फंक्शन जो होगा ना वो डेस्टिनेशन जो सोर्स टाइप है उसमें होगा. सोर्स टाइप जो है वो फ्लोट है. यू कैन नॉट राइट अ कन्वर्जन फंक्शन इन द फ्लोट टाइप बिकॉज दैट इज अ बिल्ट इन टाइप. यू कैन नॉट मॉडिफाई इट, राइट? सो बट इफ वी हैव समथिंग लाइक, सो अगर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर किलोमीटर क्लास में ओवरलोड नहीं हुआ होगा, लाइक दिस वन जिसको हमने कमेंट आउट कर दिया है, अगर ये कमेंट आउट ना होता, ये इंक्लूड होता कोड में, तो ये एग्जीक्यूट होता. अगर ये मौजूद नहीं होगा देन इट विल लुक फॉर द वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर. और अगर वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी नहीं है देन इट विल गिव यू एन एरर ओवर हियर, ठीक है. लेट्स चेक इट आउट. हमारे पास कुछ भी नहीं है, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी नहीं है और हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड भी नहीं किया हुआ किलोमीटर क्लास के अंदर. तो अब क्या होगा? सो इसने यहां पर ही एरर दे दी है बिकॉज लेट मी कमेंट आउट दिस स्माइल्स क्लास. स्माइल्स क्लास को भी कमेंट आउट कर देते हैं. ओके, इट गिव्स एरर ओवर हेयर. नो मैच फॉर ऑपरेटर इन K1, ठीक है. सो इसके लिए कोई मैच उसे नहीं मिला. सो दिस मीन्स दैट ईदर यू हैव टू प्रोवाइड this thing. So if you overload the assignment operator to convert the floating point value into the kilometer, then that will be invoked. If you won't provide that function, assignment operator overloaded function, then you must provide one argument constructor, ठीक है. तो उस सूरत में आपके पास ये one argument constructor implicitly कॉल होगा. कौन कॉल करेगा implicitly इस one argument constructor को? कंपाइलर कॉल करेगा जब आपने ये फंक्शन प्रोवाइड नहीं किया होगा उस सूरत में, ठीक है. The other case is if you for example if we have a floating point variable f and if we want to write something like f is equal to k1, f is equal to f, right? So हम इस तरह से लिखना चाह रहे हैं कि अब हम ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लोटिंग में, ठीक है. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड वी आर कन्वर्टिंग दिस यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट इनटू द बेसिक टाइप, ठीक है. बेसिक टाइप में कन्वर्ट चाह रहे हैं. सो बेसिक टाइप में हम असाइनमेंट साइन को ओवरलोड नहीं कर सकते टू कन्वर्ट द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इनटू द फ्लोटिंग पॉइंट.
राइट, बिकॉज फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो बेसिक टाइप है एंड वी कैन नॉट मेक चेंजेस इन इट, सो वी हैव टू राइट देन द कन्वर्जन फंक्शन. अब अगर सोर्स ऑब्जेक्ट की बात आ जाती है कि आपने कन्वर्जन रूटीन जो सोर्स ऑब्जेक्ट में लिखनी है, देन यू हैव टू राइट अ कन्वर्जन फंक्शन. अगर सोर्स कन्वर्जन रूटीन आपने लिखनी है सोर्स ऑब्जेक्ट में, देन यू हैव टू ओवरलोड दैट असाइनमेंट ऑपरेटर फॉर दैट टाइप. ठीक है, सो यहाँ पर K1 है, सो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि वी हैव टू राइट अ कन्वर्जन फंक्शन. सो दैट कन्वर्जन फंक्शन इज स्टार्ट विद द कीवर्ड ऑपरेटर, देन किस टाइप में आपने किलोमीटर क्लास के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है, यू हैव टू मेंशन दैट टाइप. ओके, वी वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर ऑब्जेक्ट इनटू फ्लोट टाइप, सो आई राइट फ्लोट. इफ आई वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर ऑब्जेक्ट इनटू माइल्स टाइप, then I have to write miles over here and then it will return the miles object, right? Return kilometers, where kilometer is the private data member. So इस function का invoking object कौन सा होगा? That object will become the invoking object, right? और इसके हम किलोमीटर की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं और उसको रिटर्न कर रहे हैं. दैट वैल्यू विल बी असाइन्ड टू f. ओके, लेट मी राइट ओवर हियर सी आउट. सो दिस इज km टू फ्लोट. ठीक है, सो हम किलोमीटर से फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं. लेट मी कंपाइल एंड रन इट. फर्स्ट उसने कॉल किया किलोमीटर फ्लोट टू किलोमीटर, एंड देन सेकेंड आपके पास डिस्प्ले हो रहा है किलोमीटर्स, किलोमीटर टू फ्लोट, किलोमीटर टू फ्लोट. ये फंक्शन कॉल होगा. कब ये फंक्शन कॉल होगा? जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. नाउ यू सी द वैल्यूज आर बोथ द वैल्यूज आर सेम, राइट? The next thing is if you want to convert a kilometer object into a miles object. For example, let me comment out this thing. For example, if we have a miles object m1, right? So miles में हमारे पास एक one argument constructor है, so we can initialize it here, let's say 2, and then if we want to convert किलोमीटर के ऑब्जेक्ट को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं 3, and if we want to convert like k1 is equal to m1. Now what are the possibilities? Possibilities are we can overload assignment operator in the kilometer class. We can have a conversion function in a mile class, right? Or we can, or we can have a constructor in a kilometer class जिसको हम miles class का object pass कर रहे हैं. ठीक है? So if we write m1 is equal to k1, then इस सूरत में हमारे पास we can overload assignment operator in the miles class. Like here you can see this function जिसमें हमने assignment operator को overload किया. We are passing a kilometer object and it returns, वो इस miles की वैल्यू को सेट कर देगा. ये miles जो है ये प्राइवेट डाटा मेंबर है. ठीक है, दिस इज अ प्राइवेट डाटा मेंबर. ठीक है, सो ये जो m1 ऑब्जेक्ट है, इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट है, इसके प्राइवेट डाटा मेंबर की वैल्यू को सेट कर देगा. राइट, फॉर एग्जांपल दिस माइल इज 0 एंड वी से दैट this is the value of miles, and then we can have a function m1 dot display. I think there's a function display. No, we have a function get miles. So miles के लिए हमारे पास function कौन सा है? display का function है m1 के साथ. miles के साथ display का function let me check out. No, there is no display function.
Okay, we can write a display function here, void display, and what this function will do, it will display basically cout miles, right? Okay, now okay, if we don't overload the assignment operator, then we can have a conversion routine in the kilometer class. And if we don't have a conversion routine in kilometer class, conversion function in a kilometer class, then it will invoke one argument constructor in miles class. So miles class में one argument constructor जिसको हम किलोमीटर का object pass करें, and this is this constructor, right? miles constructor with km argument. So इस constructor को वो invoke कर देगा. So अभी हमारे पास वो जो overloaded function है वो comment out हुआ हुआ है. So इस case में हमारे पास ये चीज़ हमें नज़र आएगी. So let me comment out all the statements in the kilometer class. उसकी तमाम statements को मैं comment out कर देता हूँ. So that okay. Now let's check out if when this statement is executed कि क्या constructor वाकई ही call होगा ये वाला constructor. ठीक है. Compile and execute. Error. What kind of error? There's a bracket missing, I think. Display. Strange. Compile, gives an error, expected at the end of input, and okay, so हमने ये जो कमेंट आउट किया है ये ब्रैकेट इसके आ गया. ठीक है. Now it's okay, now it will work. Now you can see it calls the miles constructor with kilometer argument, right? It calls this constructor. Now if we the overloaded function, assignment operator overloaded function, अगर हम इसको comment out करते हैं, अब ये इस function को execute करेगा. Now it will print, instead of printing constructor with km argument, now it prints miles operator, right? So that means this is printed, और इसका मतलब ये है कि इसने operator equal के function को execute किया है when it find this statement, right? So this is all about the conversion between different types, between user defined type to a basic type, between a basic type to a user defined type, and user defined type to a user defined type. Okay, so in today's lecture we will see the implicit conversion. What is an implicit conversion? So we have seen the example of implicit conversion, that if we do not provide the conversion function or conversion mechanism, then it will call the a constructor with one argument and convert that object into that type. We'll see this, and then we'll see what is the explicit constructor, and example of overloading, stream insertion and stream extraction. And then if we get time, we will go and see the introduction of inheritance. That is very important topic in object oriented programming course. So this stream insertion operator and stream extraction operator. Stream insertion operator comes with cout object, that is the object of OStream insertion, and extraction comes with the cin object, that is an object of iStream class. Implicit conversion, that is one argument constructor.
So any single argument constructor can be used by the compiler to perform an implicit conversion. For example, this is a one argument conversion. You are passing a floating value to that constructor, and it will assign that value to the private member of the invoking object. So when you write a statement in main like miles m1 is equal to 3.75, it will invoke that constructor. ठीक है, because ये statement ये constructor invoke करेगी because you are creating an object. So what about this? So if you write m1 is equal to 4.55, then it will first pass this 4.55 value to that constructor and get an object, and then that object will be assigned to m1, and that is called implicit conversion. Automatically it performs that conversion from floating point value to the miles object, and then assign that miles object to m1 object, of course whose type is miles. ठीक है, so that is called the implicit conversion, कि वो automatically compiler ये conversion खुद से perform करता है. So this 4.55, this floating point value, so if you write this statement and you have a constructor like this in your class that takes a single argument, then that constructor will be invoked and it will convert that floating point value into the object of that class, and then that object will be assigned to m1. ठीक है, m1 भी उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है. सो दोनों इक्वल साइन के दोनों तरफ अगर सेम क्लास के ऑब्जेक्ट हों तो वो कंपाइलर उसको खुद से असाइनमेंट परफॉर्म कर सकता है वो. सो दोनों ऑब्जेक्ट माइल्स क्लास के आ जाएंगे एंड दैट असाइनमेंट विल बी परफॉर्म बाय द कंपाइलर इटसेल्फ. सो दिस कन्वर्जन इज ऑटोमेटिक, दैट इज इम्प्लिसिट. Explicit constructor. What is an explicit constructor? So implicit conversion are undesirable or having chances of error. So it is quite possible that you would like that in my program कि आप अपने प्रोग्राम में implicit conversion allow ना करें. For example, अपनी क्लास में implicit conversion allow ना करें. Then you can use an explicit constructor. So making a single argument constructor explicit will avoid implicit conversion. So how we can make an explicit constructor? So this is a constructor of a distance class जिसको आप एक floating point का argument pass कर रहे हैं. So you can write a explicit keyword with that constructor. This will make that constructor an explicit constructor. What does that mean? Explicit का मतलब ये है कि जब आप इसको object creation के टाइम पे कॉल करेंगे तब ये constructor कॉल होगा, right? Otherwise ये constructor कॉल नहीं होगा. For example, let me show you an example with the program. So this is a distance class. You already know, you already remember this class very well, I think. Two private data member feet and inches. Default constructor, the constructor with two argument and a constructor with one argument. So ये जो constructor with one argument है, it will provide a conversion, implicit conversion from the floating point value to the object of distance class. ठीक है? And then we have a add dest function. Now add dest function में we can pass the prototype of that function क्या है कि इसमें आप दो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं. ठीक है, किस क्लास के? डिस्टेंस क्लास के. एंड इट विल ऐड दीज टू ऑब्जेक्ट एंड असाइन द आंसर टू द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट. सो उसके फीट और इंचेस में ये आंसर लिख रहा है. ठीक है, ऐड करके रख रहे हैं. एंड देन शो डेस्ट फंक्शन दैट इज डिस्प्लेइंग द वैल्यू, राइट? सो इन द मेन फंक्शन नाउ I create one object, so it will, so this call is the कि मैंने explicitly mention किया है कि here I am calling the constructor, right? Because I am creating an object. Now we will display the content of distance. ठीक है, so ये 2 meters में भेजा है, वो meters को feet और inches में convert करेगा और content display कर देगा. And then we are creating another object D2 by calling a 2 argument constructor. 2 feet और 3.5 inches हैं, वो यहाँ पे create कर देगा. Now you can see we are calling add dest function. और add dest function में जो पहला argument है that is 2 or that is 2.5. That is not an object of distance class, but the second argument is the object of distance class. Now will the compiler invoke the add dest function? क्या वो इसको invoke कर देगा? ये कर सकता है.
Yes, it can invoke. What it will do is it will first pass this value to the one argument constructor, because there is a one argument constructor, or then that constructor will return the object, and then that object will be passed as an argument to the add_dest function. Okay, and so that call, so converting this 2.5 into the distance object, this is implicit conversion. A compiler will do it automatically if you provide the one argument constructor. But यहाँ पर अभी हमने उस constructor को explicit नहीं बनाया, so that is allowable now. So let me compile it and run it. So this is 6. So सबसे पहले वैल्यू क्या शो करेगा, शो डेस्ट. So 2 meters हैं, 2 meters को 6 feet and 0.562 inches, and then we are adding 2 feet into 2.5 into 2.5 meters, and we get 10 feet and 3.7025 inches. ठीक है, so that is the value of dest3 object जो कि sum हो गया ये. So this is allowable. This is called the implicit conversion, and this is allowable because we haven't made this constructor explicit. So if we write a keyword explicit with this constructor, now then this call won't be allowed. For example, so it will give an error over here, right? So we can call it like this, but this call is not allowed. That is, it will not convert a floating point value implicitly into the distance object. ठीक है? So no matching function for call to distance, add_dest, double और distance का object. So ये कह रहा है कि add_dest का जो function है जो क्लास में है उसको दोनों जो argument पास हो रही है वो distance टाइप की हो रहे हैं, जबकि आप जो मेन में कॉल कर रहे हैं उसमें एक argument डबल है और दूसरा distance है. So उसको कोई ऐसा function नहीं मिला. So ऐसा function कोई भी नहीं है यहाँ पर, right? क्लास डेफिनेशन में जो function है वो दोनों distance object के साथ है. But you can call this function implicitly, explicitly. आप वो constructor explicitly call कर सकते हैं like this. Let's check it out. Okay, we can call this like. So हम इसको इस तरह से कॉल कर सकते हैं. तो इस तरह से कॉल करने का मतलब क्या है कि आपने explicit constructor को कॉल किया है, explicitly कॉल कर लिया है. So अब जब ये कॉल हो गई तो सबसे पहले ये कॉल एग्जीक्यूट होगी and it will return the object. Now अब इस particular case में इसका फ़ायदा क्या हो रहा है कि you cannot make a call like this. ठीक है, and that is maybe confusing sometimes कि add_dest function जो है उसमें दोनों distance type के object पास हो रहे हैं, then why this floating point object is passing to that function, right? So in order to avoid this, you can make the one argument constructor as a explicit constructor कि जब object create होगा और उस time पे आपने इसको call करना है, otherwise इसको implicitly call नहीं करना, right? So if you compile it, it will give you an error over here. So अगर आप यहाँ पे distance इस तरह से कॉल करेंगे कंस्ट्रक्टर को and compile and execute it, now it will execute perfectly fine because अब आप कंस्ट्रक्टर को खुद से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, कंपाइलर implicitly नहीं कर रहा. ठीक है, so that is the difference. So in order to avoid implicit conversion, you can make one argument constructor an explicit constructor. ठीक है, और उसके लिए क्या है कि आप keyword constructor use कर सकते हैं. Now overloading stream insertion and stream extraction operators. So for example, in the distance class we have a function get value that is used to get value from the user. So उसमें हमारे पास एक cout था, enter feet, then in feet, and cout enter inches and in inches. ठीक है, so we can avoid calling such calling, and then show value function क्या करता था कि वो feet और inches की value को display कर देता था. test1 के feet और inches की value को display कर देता था. So we know these function very well now. So what we can do is, so if we are able to write such statement, so we have a distance object. So instead of calling the function like this, because get value function क्या करता है, user से input लेगा. So in function क्या करता है,
that can also be used to take input from the user, but now अब हम जो input ले रहे हैं वो किसी primitive type में ले रहे, वो dest1 object में ले रहे हैं, ठीक है. And this is not possible without overloading stream insertion or extraction operator in the distance class, ठीक है. So यहाँ पर that is a stream insertion operator, we overload the stream insertion operator in the distance class. So इसका benefit क्या होगा? So if we write C in, then less than greater than sign and dest1, ठीक है. So if we write C in stream insertion extraction operator dest1, then the benefit is that it will automatically display the message enter feet. We enter the feet. It display the message enter inches, we input the inches. So these statements are executed. जो हमने C in लिखा है, C in greater than dest1 लिखा है. Why these statements are executed? Because we overload this operator. जो हमारे पास greater than sign का जो operator आ रहा है bitwise, ये जो basically ये जो operator है that is bitwise right shift operator. So ये राइट शिफ्ट परफॉर्म करता है. सो इस ऑपरेटर को आयो स्ट्रीम क्लास में भी ओवरलोड किया गया है या ओ स्ट्रीम क्लास में ओवरलोड किया गया है. सो इसको हम डिस्टेंस क्लास में भी ओवरलोड कर सकते हैं, किसी भी यूजर डिफाइंड क्लास में ओवरलोड कर सकते हैं. वी विल सी द ओवरलोडेड फंक्शन एंड देन फॉर सी आउट इट जस्ट डिस्प्ले दिस वैल्यू. सो इफ यू से सी आउट dest1, so it display this value, right? So that is more convenient to use instead of calling a function. So for that what we have to do is we have to overload this operator. So to overload any operator you use the keyword overload and then the operator you are going to overload. So you are overloading this greater than sign operator and you are passing the iStream object, that is the reference of C in object to that function and the reference of the distance object, and this function will return the iStream reference and this function is a friend function, ठीक है. So same is the case with the less than sign function. It returns, we are passing the reference of cout object, that is oStream object. So cout object की type क्या, oStream. So we are passing the object reference and a distance reference, ठीक है. So the second case में, इस case में, इस particular case में it will invoke this function और इस case में C in greater than dest1 it will invoke this first function, ठीक है. So these two are the friend function of the distance class, and the benefit we have seen is when we write this function, when we write this statement, then it will display us like this. So we avoid by calling the function like this dest1 dot get value, ठीक है. So और cout में इसको इस तरह से लिखेंगे तो it will display the value of dest1 like this, ठीक है. So let's go into the detail of the definition of the overloaded operator function. So this is the overloaded operator function. इसमें हमने जो greater than sign है उसको overload किया है and we are passing the reference of the C in object, that is an object of iStream class. उस reference का नाम हमने रखा है S, and we are also passing the reference of a distance class, right? So what it will do, it will display the message enter feet, and then what it will do, it will extract from S to D dot feet. और S क्या है basically, C in का reference है basically. So whatever you are writing in iStream, right? So और that is C in object और वो object से insert कर देगा D dot feet में. Similarly D dot inches में जो second value that will be written in D dot inches, and D is the object of the invoking object, right? D is the reference of the invoking object, और invoking object कौन सा था हमारे previous example में, that is dest1. So dest1 is the invoking object, right? And similarly this is the operator less than sign overloaded function. हमने इसमें less than operator को overload किया है, and we are passing oStream object,
the reference of O stream object, that is the reference of C out. So what it will do is it will write this string in S, and that is the reference of C out here, right? So C out में जब वो लिखने का मकसद क्या है कि वो डिस्प्ले हो जाएगी आपके पास चीज स्क्रीन के ऊपर, right? And then it return S, and that will be assigned to C out, and that will it will display that thing on the screen. Okay, so let's go to the example program. So this is the example program, and we make this function friend function. I will tell you the detail why we need to make these function friend function in the class. ठीक है, ये हमें friend function बनाने की क्यों जरूरत पड़ती है. So जब C इनके साथ ये appear होगा तो उस सूरत में that function will be invoked, और इसको जो पास होगा the reference of C in will be passed and the reference of dest1 जो ऑब्जेक्ट है, पहले dest1 का रेफरेंस पास होगा, बाद में dest2 का रेफरेंस पास होगा. ठीक है, सो dest1 का रेफरेंस पास हो गया, एंड देन यू टेक इनपुट, एंड देन आपने बेसिकली यहाँ पर S जो है दैट इज C in एक्चुअली, राइट, बिकॉज S इज द रेफरेंस ऑफ C in ऑब्जेक्ट. सो आपके पास मैसेज डिस्प्ले इस तरह से हो जाएगा C out के थ्रू. दैट इज वन स्टेटमेंट. द अदर स्टेटमेंट इज S greater than sign D dot feet, right? So whatever it reads from here, it will write it in D1, right? Whatever it read from here, it will write in D dot inches, and then it returns S. और उसके बाद जब आप C out के साथ dest1 की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, dest1 आएगा, C out, so that will simply display. But here in this case, this is a user defined object, so you must provide, you must overload this operator, less than sign operator, that is bitwise left shift. You are passing the reference of the C out object and the reference of the dest1 object, और आप उस dest1 के feet और inches को you are writing on C out. ठीक है, and then you return that reference, और वो आपके पास स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा. So if I compile this program, so C out में आपके पास क्या है, enter to distance value, so we are inputting two distance values using C in operator, and then using C out it display the value of dest1, dest2 and dest3, right? Close, run it. Feet is 2, inches is 2.5, feet is 3, inches is 3.5, and it display all the value. So 2 feet 2.5 inches, 3 feet 3.5 inches, and dest3 की 11 feet and 6.25 inches, right? So that is all about the operator overloading and conversion function. Now we come to the very important topic of the object oriented programming course, and that is called inheritance. Inheritance is the process of creating new classes called derived classes from the existing or the base class. So the derived class inherits all the capabilities of the base class but can add refinements of its own. So यहाँ पर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि base class is a parent class and a derived class is a specialized child class, right? The base class is unchanged by this process. इस process से base class change नहीं होगी if we derive any class from the base class, or if we derive a class B from a class A. Both are user defined class, let's say. So इसमें class A को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? We will see in the detail. Some example of inheritance is, for example, हमारे पास base class है student की. We can derive classes graduate student, undergraduate student. ये दो different classes हो सकती हैं, इनकी different classes बन सकती हैं, and then these two classes are basically derived from the student class. So graduate student या undergraduate student की class में हमारे पास इनसे specific चीज़ें जो हैं attributes वही आएंगे. जो जर्नल स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स हैं वो स्टूडेंट क्लास में आ जाएंगे, एंड देन ग्रेजुएट स्टूडेंट से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ग्रेजुएट स्टूडेंट में आएंगे, और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अंडर ग्रेजुएट में आएंगे. देन वी हैव अ बेस क्लास शेप,
and we can derive classes circle, triangle, rectangle, sphere, cubes from shape, right? Loan, employee base class है, and then derive class are faculty and staff. So faculty भी एक class हो सकती है, staff भी एक class हो सकता है. They are both derived from the employee class. Employee की एक basic attributes होते हैं. So faculty के attributes specialized attributes होंगे कुछ अपने, for example number of publications, जो कि staff की नहीं होंगी basically, ठीक है. staff किस तरह से अपने different attributes होंगे कि professional courses, management courses इन्होंने कितने किए हुए हैं for example, इस तरह के attributes. So similarly accounts की you have a checking account based derived class and saving account class. Inheritance hierarchy for university. So top hierarchy में हमारे पास जो class है that is member, community member. So employee is a community member, student is a community member, alumni is also a community member. So the student and employee and alumni, they are basically derived from community member class. So इसमें boxes में आपको जितनी भी आपको show हो रही हैं these are classes, ठीक है, और ये messages हैं. So this is called single inheritance because student class is derived from a single class that is community member class. So ये हमारे पास single inheritance है. Now a faculty and staff are derived from a student class, from employee class. Graduate and undergraduate students are derived from a student class, ठीक है, जिसको हमने पहले देखा था. सो एम्प्लॉय को लेकर चलते हैं. एम्प्लॉय क्लास से दो क्लासेस ड्राइव हो रही हैं, फैकल्टी क्लास एंड स्टाफ. सो फैकल्टी इज अ एम्प्लॉय, स्टाफ इज आल्सो एन एम्प्लॉय, ठीक है. एंड फैकल्टी क्लास इज ड्राइव फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास एंड स्टाफ क्लास इज आल्सो ड्राइव फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास. सो दिस इज अ सिंबल, ये जो एरो एम्प्टी आपको शो हो रहा है, दिस इज अ सिंबल फॉर इनहेरिटेंस, राइट. दिस मीन्स दैट फैकल्टी इज ड्राइव फ्रॉम एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय इज ड्राइव फ्रॉम कम्युनिटी मेंबर क्लास. So staff और employee भी single inheritance को use कर रही हैं. They both are inherited from a single class, ठीक है. And then faculty, administrator is also a faculty and teacher is also a faculty, right. So they both are using a single inheritance because they are derived from the single class. Now administrator teacher. Now administrator teacher is derived from the administrator class and it is also derived from the teacher class. अच्छा, ये derived का मतलब क्या होता है और C में derived कैसे करते हैं, कैसे derived class बनाते हैं और उससे क्या क्या चीज़ें हम access कर सकते हैं parent class की, we will see in detail, right. So parent classes में कौन सी है? Employee is a child of community member class. Administrator teacher is a child of teacher class and it's also a child of administrator class, right, we can say. Or we can say administrator teacher is derived from administrator and administrator teacher is derived from teacher class as well, ठीक है. So now here it uses multiple inheritance because administrator teacher uses multiple inheritance. Why? Because it is derived from two different classes. वो दो different classes से drive हो गया आई आपके पास. And this empty arrow symbol is used for a drive class, ठीक है. इसको आपने याद रखना है कि ये drive class के लिए use हो सकता है. So this is the inheritance hierarchy of a university. Now let's see the inheritance hierarchy of the shapes. So we have a shape class, that is the base class, and then we can have a two-dimensional shape and three-dimensional shape. So they are both different classes and they are both derived from shape class. So we can say two-dimensional shape is a shape, a three-dimensional shape is a shape, right. So ये relationship बता रहा हूँ आपको मैं कि inheritance के through हमारे पास relationship जो आता है that is a relationship. हम इसकी detail देखते हैं अभी. So circle is derived from two-dimensional shape. Similarly, square is derived from two-dimensional square, and triangle is derived from two-dimensional square. So ये तीनों जो है हमारे पास two-dimensional shapes हैं, ठीक है. So इनके जो common attributes होंगे, they are in the two-dimensional shape class, और इनके specialized जो attributes होंगे, they exist in their own classes, ठीक है. इसी तरह से sphere, cube और टेट्राहेड्रन ये जो क्लासेस हैं these are derived from the three-dimensional shape class. So इसमें तमाम इस एग्जांपल में हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस यूज हो रही है. there is no single class that is derived from a multiple classes. So child class हमेशा parent class से drive होती है, ठीक है. So इसमें से child class कौन सी है? For example, triangle is a child class and this two-dimensional shape is a parent class.
right? And the symbol for the drive is inheritance is this empty arrow. Okay, this is the C code. For example, if you want to write class, if you want to drive two-dimensional shape class from a shape class, ठीक है? अगर आप two-dimensional shape class को drive करना चाह रहे हैं shape class से, then you can write this in the definition of two-dimensional shape class. So अब मैं लिखने जा रहा हूँ two-dimensional shape class की definition, class two-dimensional shape, and then I put the bracket and write the definition of the two-dimensional shape. But for inheritance, if that two-dimensional shape class is inherited from shape class, then I have to put semicolon and write a keyword public and shape. So इसमें parent class होगी shape, the child class or the derived class is the two-dimensional shape. So base class इसमें हमारे पास है shape and the derived class is the two-dimensional shape, right? So that is the syntax of C. In order to write in order to show the inheritance relationship between the two classes. So here this is the base class and this is the drive class, ठीक है? So ये हमारे पास base class है and this is the drive class, ठीक है? That is the drive class, and the type of inheritance is public. We will see what does that mean if the type of inheritance is public, ठीक है? So this is the base class. We can see in the base class it contains three features, feature A, B, C, right? So we have a drive class and this arrow shows that, so this empty arrows, if I put an empty arrow over here, so this arrow shows, arrow means that this is derived from. So derived class is basically derived from base class. Now if we have a such thing in C, then this means that, what this actually means, that this class is derived from base class. This means that the derived class can have the access to all the attributes of the base class plus its own feature. So base class के जितने भी attributes हैं, जितने भी data members हैं, उनकी derived class में access होगी, प्लस जो उसके एक्स्ट्रा अपने फीचर हैं वो भी ड्राइव क्लास में होंगे मौजूद, ठीक है? सो दैट इज व्हाट ड्राइव क्लास का इसमें ये फ़ायदा हमें होगा. सो इफ़ वी से दैट क्लास बी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम क्लास ए, सो क्लास ए के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी फीचर्स हैं, दे आर एक्सेसिबल इन बी क्लास एंड बी क्लास मे हैव इट्स ओन स्पेशलाइज्ड फीचर एज वेल, ठीक है? So these A, B, C features, A, B and C features are defined in base class but accessible from the drive class. So drive class accessible है. So अब आपको कुछ थोड़ा बहुत idea हो गया होगा कि what does that mean if I say a class is derived from a base class. Relationship. Inheritance represents is-are relationship. In an is-are relationship, an object of a derived class also can be treated as an object of a base class. So मेरे पास एक drive class है, एक base class है, and that is for example class A is the base class and class B is derived from class A, then the object B are also considered to be the object of A class, ठीक है? So in an is-a relationship, an object of a derived class also can be treated as an object of a base class. For example, a car is a vehicle, ठीक है? So properties and behavior of a vehicle are also properties of a car, right? So if vehicle is a base class, ठीक है, और car is a derived from a vehicle class, yes, car is derived from a vehicle class because vehicle की कुछ properties हैं, ठीक है? vehicle आपके पास कौन कौन से हो सकती हैं? vehicle is a base class and then the derived class are cars, truck, maybe motorbike, bicycle. So these are also derived from the vehicle class, ठीक है? And car class में आपके पास कोई कार की special attributes होंगे. So if you make an object of a car class, then that object is also treated as an object of vehicle class because car class is derived from the vehicle class. In inheritance, big payoff is that it permits code reusability. कोड रियूजेबिलिटी किस तरह से कि इंस्टेड ऑफ के व्हीकल की
दुनिया में जितने भी व्हीकल हैं उसके कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन बिहेवियर, कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे. सो वी पुट दैट एट्रीब्यूट्स इन द व्हीकल क्लास एंड देन वी inherit or derived other specialized classes, for example car, truck, bus, trawler, motorbike, bicycle. So ये जो specialized classes हैं ये derived कर लेते हैं vehicle class से. Instead of writing all the attributes that are common among all the vehicle in the world, ठीक है, सो उसको बजाय हर क्लास में सेपरेट लिखने के उसको हमने एक दफ़ा लिख लिया है ऊपर बेस क्लास में और फिर तमाम क्लासेस को उससे ड्राइव कर लिए, राइट. सो इसे ड्राइव करने से क्या होगा, जब आपने ड्राइव कर लिया तमाम क्लासेस को, तमाम कार क्लास को ड्राइव कर लिया व्हीकल क्लास से, तो व्हीकल क्लास के एट्रीब्यूट्स जो बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं हर व्हीकल के, दे आर आल्सो एक्सेसिबल इन द कार क्लास. ठीक है, सो इससे कोड रीयूजेबिलिटी होगी. इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट कॉमन कोड इन द कार क्लास, ट्रक क्लास और बस क्लास और मोटरसाइकिल क्लास, you put that common code of all the vehicles of all such type of vehicle and make a vehicle class. ठीक है, and then you drive these car, bus, truck and motorcycle classes from that base class. So इससे कोड reusability हो रही है कि आप कोड को reuse करें. Instead of writing the same code in multiple classes, you write code just at one place. Once a base class is written and debugged, it need not to be touched again, but using inheritance, it can be adopted to work in a different situation. Reusing existing code save time and money and increase program reusability. So that is the example of a derived class and base class. So here we have a class counter. And in that counter class we have one data member that is count, a constructor, get count function, and we overload plus plus operator, that is the unary increment operator for the object of counter class. So counter class हम पहले भी familiar हैं, and that there is a return statement return, and it call the constructor, pass it the object plus plus count, and it returns the object. ठीक है. So let's say this is a counter class. We want to make another class, or we want that a counter can be decremented. ठीक है. So ये तो हमारे पास एक बेस क्लास बनी हुई है जिसको बहुत सारी सिचुएशन में बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया जा रहा है. So if we want कि काउंटर हमारा डिक्रीमेंट भी हो बजाय कि इंक्रीमेंट ही सिर्फ हो, वो we can use minus minus with the count as well, so that it decrement by 1. So what we can do, instead of making changes in the base class that can be used by the different programs or that can be derived by the other classes, we drive a class from counter class, and the name of the class is count dn, decrement count, and that is the syntax of driving a class, of making an inheritance relationship. So this means that count dn class is derived from counter class, and the type of that derivation or the inheritance is basically public. So public inheritance हुई हुई यहाँ पे. So ये colon, full colon आएगा, that is the syntax, then type of the inheritance, and then name of the base class, and then curly bracket and closing curly bracket जो class की होती है हमारे पास. अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी आप देखें, we have a private data, we do not have any private data member in the counter class. हमारे पास जो data member है that is protected. ठीक है, and then we have a public functions. So what is protected? Protected data members are those data members that are accessible directly in all the derived classes. ठीक है, सो उस क्लास से जितनी भी आप क्लासेस ड्राइव कर लेंगे उन तमाम में डाटा मेंबर एक्सेसिबल होंगे. बट अगर आप उनको प्राइवेट डाटा मेंबर रखेंगे देन दोज डाटा मेंबर वोंट बी एक्सेसिबल इन द ड्राइव क्लासेस. सो व्हाट वी डिड इन द काउंट dn class, we just write a definition of one function, that is count operator minus minus, and what it does, it returns the object of counter class but it decrements the value. ठीक है, सो वो इंक्रीमेंट करने के बजाय डिक्रीमेंट कर रहा है. सो काउंट dn क्लास को हमने ड्राइव किया है काउंटर क्लास से, और हमने ऑपरेटर माइनस माइनस फंक्शन एक ऑपरेटर को ओवरलोड किया है माइनस माइनस काउंट dn क्लास में. सो इट डजंट अफेक्ट
the counter class. Means that if we create an object of counter class, we cannot perform minus minus c a decrement operation, right? Because in counter class we haven't provide the operator overloaded function minus minus. So अगर आपके पास count dn का object है, उसको आप decrement कर सकते हैं, and count dn object will have the protected data member of the counter class. Okay, that is the end of our today's lecture. We will continue from here in our next lecture. Thank you very much.